चैप्टर नंबर 13, kinetic theory of gases. तो kinetic theory of gases में what we are going to see, gas particles. It is about the gas particles which are in constant motion above 0 Kelvin. They will be moving, hitting the walls of the cylinder and producing the pressure, forces and pressure. So they are in random motion. Gas particles are in random motion and producing and hitting the walls of the container as well as piston, and also there is a pressure due to that. So we'll see how much pressure they apply and what factors they depend. The pressure depends. Before that, we are going to see the about the what is called about the ideal gas equation and different velocities, RMS velocities, and root mean average velocity of the gas particles, because they will not be moving with the same velocity. So there will be some average velocity of the gas particles. There will be root mean square velocity of the gas particles. There is the most probable velocity of the gas particles. So these are the points we are going to see here, and Avogadro's number, etc., and concept of mean free path we are going to see, and also the ideal gas equation. So we'll start with the ideal gas equation. Already we have done it, but let's see some more other form of the ideal gas equation. So if I ask you, can you find out the how many gas particles are there in your room? बताइए, अगर आपको मैं बोलूं कि tell me how many gas particles are there in your room. Can you do it? Can you find out? कैसे निकालेंगे बोलिए. Any method to determine the gas particles? Of course, individual निकालना मुश्किल है, but total number of gas particles can be found out. Total Sir, number of gas particles. Yeah. Can we find out the number of moles somewhere and then multiplied by 6.022 into 10 to Number the of power moles 22? multiplied by Avogadro's number. So how to get the number of moles? How to get the number of moles? Sir, that Given mass upon molar mass. Ideal gas equation. We'll use the ideal gas equation. PV is equal to nRT. P is the pressure, V is the volume. Volume you can measure. Temperature you can measure. So ideal gas equation is helpful in determining the gas particles in the room or in the classroom. So ideal gas equation relates the pressure, volume and temperature and number of moles at any place in cylinder, or even valid for the room also. And where P is the total pressure, which will be absolute pressure. R is the universal gas constant. Its value will be 8.314 SI unit, and N is the number of moles. NCERT book में they have used the symbol mu. Mu symbol use किया है ना? But we'll take N, most commonly used symbol. Text book में mu symbol use किया, but we are using N only. ठीक है? And M is the mass of the gas, total mass of the gas in the cylinder. M naught will be the molar mass of that particular gas. N will be the number of gas particles. Particular gas में कितने particles होंगे, that. Na will be the Avogadro's number. That Avogadro's number क्या होता है? Number of gas particles in 1 mole of the gas. It is fixed. कितना होता है? 6.023 10 to the power 23. So roughly we can take it 6 into 10 to the power 23. Quite a big number. Unit होगा? Avogadro's number का unit होगा कोई? Yes, there is a unit per mole. We have to write. These are the numbers in 1 mole, per mole. Divide by mole. So you have to write this unit. Otherwise, other units will go wrong if you don't write the unit here properly. So number of moles निकालना है. तो total mass of the gas divided by molar mass, है ना? आपको अगर पता लग जाए इतनी गैस है, सपोज ऑक्सीजन का if you come to know 64 ग्राम है ना?
ऑक्सीजन गैस, तो उसका मोलर मास कितना होता है 32, तो डिवाइड कर दो 32 से, तो 2 मोल्स, like this. Otherwise, if you know the total number of gas particles, divide by Avogadro's number, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर हम, इफ यू नो नंबर ऑफ मोल्स, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, इफ यू नो नंबर ऑफ मोल्स multiplied by molar mass will give you the total mass of the gas. If you know number of moles multiplied by Avogadro's number will give you the total number of gas particles. अगर 1 है तो you will get the Na number. ऐसे मोलर मास अगर यहाँ पे 1 है, नंबर ऑफ मोल्स 1, तो मास will be equal to molar mass, है ना. And here number of gas particle will be equal to Avogadro's number. If this number of mole will decide total mass कितना है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं. If m is the mass of each gas particle, then total mass can also be written mass of each gas particle into total number of gas particles. अगर एक गैस पार्टिकल का मास पता है, टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पता है, तो टोटल मास मिल जाएगा. ठीक है, यहाँ तक ठीक है, नो प्रॉब्लम. आइडियल गैस इक्वेशन, R is the universal gas constant, value is 8.314 SI यूनिट. SI यूनिट यहाँ से आ जाएगी, N को नीचे भेज दो, T को नीचे भेज दो, P into V the work done जूल, N डिनोमिनेटर में है तो पर मोल, टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है तो पर केल्विन. ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर आइडियल गैस इक्वेशन which can help you to find out the number of gas particles in your room. तो let's see how further. या तो n निकाल लो, नंबर ऑफ मोल इससे निकाल लो, और एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो. यू मेजर द प्रेशर इन योर रूम. प्रेशर को मेजर करने की जरूरत नहीं, इट विल बी 1 एटमॉस्फेयर विच इज 10 to the power 5, है ना. वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा, टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजर करना पड़ेगा. तो विल गेट n एंड उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट द टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स. सिंपल. ठीक है यहाँ तक. Are you Yes. there? Yes, sir. So some more constants are also there, like Boltzmann constant. Boltzmann constant is nothing but a ratio of universal gas constant divided by Avogadro's number. है ना. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, देखो, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई Na into Kb, Na into Kb is equal to R. A एंड बी सबस्क्रिप्ट वाले टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए किसके साथ है, एवोगाड्रो नंबर के साथ है, बी किसके साथ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ है. इफ यू मल्टीप्लाई बोथ वी गेट आर, है ना. तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज नथिंग बट ए गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर. तो ये कितना है, इसकी वैल्यू 8.314 है, एंड ऐसा यूनिट ये है ना. एंड एवोगाड्रो नंबर is this per mole. Per mole getting cancelled, तो joules per Kelvin. तो Boltzmann constant की value is quite a low value, है ना, because Avogadro's number is quite high, and we have to divide by Avogadro's number. So Boltzmann constant is low value, 1.38 into 10 to the power minus 23 joules per Kelvin. So sometimes it is given, sometimes you should better remember, or it will be given, but you should have rough idea. Boltzmann constant is the ratio of gas constant divided by Avogadro's number. More information may be given in chemistry also. So we are using just least information, whichever we need it, utna ही use कर रहे हैं हम लोग. And history and all we can discuss later on, this Boltzmann constant and all. Avogadro's number को भी हम बाद में discuss कर सकते हैं. But this much is okay. What you have to remember, ideal gas equation तो याद होनी चाहिए, and some
constants and number of moles कैसे निकालते हैं, that constant most of the time may be given to you. All right, and it will be total pressure, absolute. This temperature is absolute temperature, therefore pressure is also absolute pressure, total pressure, है ना, right from 0 से कितना more है. और गैस प्रेशर कहाँ से काउंट करते हैं? Above atmospheric pressure. Gauge pressure is counted from the atmosphere. Atmospheric pressure के ऊपर कितना प्रेशर है, that much. Absolute pressure is 0 से कितना है, वैक्यूम से कितना ज्यादा, वैक्यूम से काउंट करेंगे, 0 प्रेशर से. एंड ये जो पॉइंट मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, तो R इज इक्वल टू Na इंटू KB. तो यहाँ पे देखो एक और दिस Na इंटू KB, R की वैल्यू पुट कर दी हमने, Na इंटू KB यहाँ पे. कैन यू सी आइडियल गैस इक्वेशन में? बट N इंटू Na इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल. यहाँ पे देखो दिस टर्म वी हैव यूज्ड, ये वाला टर्म हमने यहाँ पे लिखा है, R की वैल्यू और number of moles multiplied by Avogadro's number is total number of gas particles. This is the other equation given in our textbook. ठीक है, इसमें देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं total number of gas particles. If you use the pressure, if you write the pressure, value of pressure and volume, Boltzmann constant की वैल्यू ये पुट कर देंगे, टेम्परेचर नोट कर लेंगे, तो n will directly be coming, number of gas particles will be directly coming from this. So this is also given equation. This is nothing but the ideal gas equation. This is equation number 2. This is equation number 1. ठीक है, तो यहाँ पर nRT है और यहाँ पे nkt है, nkbt है. लेफ्ट साइड में तो सेम है. फर्स्ट इक्वेशन में nRT, n इज द स्मॉल n देयर, एंड यहाँ पे कैपिटल n है, तो nRT और here nkt. ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स inclusive of oxygen, nitrogen, water vapor and other constituents in the room of capacity 25 meter square, meter cube, sorry, at temperature of 27 degree Celsius, 1 atmosphere. So everything is given. इसमें put कर दो या फिर first equation. If you don't remember this, no problem. First equation से n निकाल लो और फिर इसको na से मल्टीप्लाई कर दो. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही पूछा है ना. दिस इज द क्वेश्चन विच आई आस्क यू, सेम क्वेश्चन. तो टेम्परेचर कितना लेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 273 ऐड कर देंगे. इट विल बी 300 केल्विन में होना चाहिए, सिंगल टेम्परेचर है, तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन. एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 1 atm, which is 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. Volume is given in SI unit, 25 meter cube. So if you remember second equation, find PV is equal to nRT. इसमें P की वैल्यू पुट कर दी हमने 1.0. ओके, इसको 1 10 to the power 5 ही ले लें क्या? ओके, ठीक है, आई एम राइटिंग, यू कैन जस्ट डू इट, कैलकुलेशन यू कैन डू इट लेटर ऑन. वॉल्यूम 25 गिवन, n. अच्छा, ये सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं क्या? nkbt, n निकालना है. kb कितना था, 1.38. इट मे बी गिवन और नहीं दिया है तो जस्ट यू गो बैक टू द बेसिक्स. फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो. इट्स अप टू यू. इफ यू रिमेंबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, यूज दिस 1.38, अदरवाइज एवोगाड्रोस नंबर से निकालो. कितना है, 23. एंड T कितना है, 300 इंटू 300. इफ यू सॉल्व इट, क्या निकलना है ना, इफ यू सॉल्व इट, it comes to be 6.10 into 10 to the power 26. कितने मोल्स होंगे,
हाउ मेनी मोल्स इट विल बी, मोल्स निकालने के लिए क्या करें, इतने पार्टिकल्स है ना, Divide by 6 the Avogadro. यस, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, इसको n से डिवाइड कर दो na से, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. इट सर्टेनली दे आर मोर देन 1000 मोल्स है ना, 10⁻23 है ना एवोगाड्रो नंबर, तो रफली 1000 moles है ना, quite a big number. I told you hundreds of thousands of moles remains in the room because when we breathe in and breathe out, roughly we breathe in or breathe out 1 mole. That about 23 particles we can inhale or exhale in one attempt. All right. ठीक है. Are you there? Yes, sir. Particles are molecules. You can write molecules are particles. ऐसे ही ये क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई. क्वेश्चन नंबर 13.4 यू कैन ट्राई. पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, कितने लीक हो गए, कितने उसको, नंबर ऑफ मोल्स से मास निकालना पड़ेगा, है ना, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स से मोलर मास मतलब मास निकाल सकते हैं ये वाला फार्मूला लगा के. तो इनिशियल मास निकाल सकते हैं m1, है ना, और फाइनल मास निकाल सकते हैं m2, एंड डिफरेंस ऑफ दैट विल बी गिविंग यू हाउ मच मास हैज बीन रिमूव्ड. तो कैलकुलेशन है इसमें, यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 आइडियल गैस इक्वेशन से. एंड ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई दैट. देखो, सपोज 5th करने से पहले थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन को उसका we can change the form of the ideal gas equation. Suppose you have the gas in this cylinder, यहाँ पे piston यहाँ पर है, you have the number of moles and इसमें, and piston is forced outward. अभी यहाँ पर आ गया, तो what one thing is constant here, number of moles जितने पहले थे उतने ही हैं, number of moles are not changing, है ना, number of moles are not changing. तो n1 is equal to n2, तो n को क्या ले सकते हैं हम, p1 v1 अपॉन RT1, P2 V2 अपॉन RT2, R भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी R भी कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट वी गेट इज P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. तो क्या कंक्लूजन है, इफ नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट देन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. ठीक है, तो दैट्स व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग ideal gas equation for numerical point of view. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. तो based on this formula, clear? इसमें कोई डाउट है आपको? No, sir. Now, okay. Now question is there. यहाँ पे एक bubble है, air bubble at the bottom of the lake. It moves up and comes to the surface where pressure will be 1 atmosphere and number of moles will not change. It remains air bubble. Whatever the air particles are trapped inside here, it is not going to burst. It remain intact. Volume will increase, है ना, क्योंकि pressure decrease हो गया यहाँ पर, volume will increase. So that's what question is. What, let us see. An air bubble of volume 1 centimeter cube rises from the bottom of the lake 40 meter deep at the temperature 12 degrees Celsius. To what volume does it grow when it reaches to the surface, which is at the temperature 35? तो T1 कितना है, 12 plus 273, है ना, और T2 कितना होगा, कितना दिया, 35 plus 273. तो ये ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं T1 T2. प्रेशर यहाँ पे कितना प्रेशर होगा एट द बॉटम प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेयर प्लस H rho g. ठीक है, तो आपके पास T1 है, एक मिनट, ये सॉल्व आपको खुद ही करना है.
P1 कितना हो जाएगा, जस्ट लेट मी राइट हियर, एच रो जी प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम को ऐसे ही रहना तो सेंटीमीटर में ही आंसर है, देखते हैं आंसर किस में दिया है, मीटर में दिया है क्या, ओके मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ तो कितना दिया है 1, 1 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा -6, ठीक है। T1 ये टेम्परेचर लिख दो, कितना आ रहा है 75 295 है ना। P2 यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 10⁵ ले लेना, V2 निकालना है, ये टेम्परेचर कितना हो रहा है 35, तो ये हो जाएगा आपका 308, और एटमॉस्फेरिक H की वैल्यू हमें निकालना क्या है, H इज गिवन, हाँ H इज गिवन 40 मीटर, रो कितना होता है पानी का, रो इज 10⁻3, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3 ऐसा यूनिट, G 10 ले सकते हैं या 9.8, इफ यू सॉल्व इट तो V2 आपका कितना आ रहा है, वैल्यू पुट करके 5.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, सॉल्विंग इज slightly lengthy, but you should be able to solve it to the close to the right answer, ठीक है, समझ, method is clear to everyone. This question is generally being asked in competitive examination also. There what they give you temperature, they will give you same, temperature वाला terms cancel हो जाएगा and rest of the things will remain same, you have to solve it for depth, H के लिए solve करना पड़ेगा. So can you complete this question? Anybody has any doubt in this? Sir, Yeah. T1 will be 285 Kelvin. No? It's 285 हो रहा है क्या, 275. कहाँ पे T1 73, ओके 70 75 85 है ना, कहाँ पे, थैंक यू 12 है ना, ओके 12 83 2, ओके थैंक यू, हाँ एनीथिंग एल्स, ठीक है. So these type of questions will be done by the ideal gas equation, which can be used like this also. Number of moles doesn't change, so P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. ठीक है. तो question number 5 है ये, can be important for competitive examination also because pressure calculation is based on the previous chapter. यहाँ पर atmospheric pressure है plus H rho g, total pressure initial is at the depth is more pressure. Pressure decreases, its volume goes up. When it comes to the surface, it will expand. All right. तो क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं इसी उससे, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पर बेस है, P1 it is in this ideal gas equation में वॉल्यूम निकालना है ना. अच्छा इसमें लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, एक में जनरली you will be thinking about this point. The molar volume is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure. So standard temperature and pressure, how much is it taken? Standard pressure is 1 atmosphere and standard temperature is 0 degree Celsius. ठीक है, तो फिजिक्स में हमें ये लेना है, STP means 0 Kelvin 0 degree Celsius लेना है, which will be 273 Kelvin and pressure 1 atmosphere. Show that its volume is 22.4 liter. वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, वो शो करना है, हमें कैलकुलेट करना है. तो आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर में राउंड फिगर में ले लिया 10⁵, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, हमें प्रूव करना है वॉल्यूम विल बी 22.4 एंड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, R इज 8.3, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे it will come 22.4 into 10⁻³ meter cube, -3 मीटर क्यूब आएगा. तो लीटर में कितना हो जाएगा ये 10⁻³ तो it will be
because 1 liter is 10 to the power minus 3 meter. क्यों यहाँ पे लिखूं? Since 1 liter is equal to 1000 cc, 1000 cubic centimeter, एंड इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे 10 to the power यहाँ पे minus 6 आएगा, 10 power 3 ये है ही पहले से, 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब बचेगा. तो दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट 22.4 लीटर. तो ये तो हो गया आपका प्रूफ. क्लियर? इसमें कोई डाउट है? नाउ आई हैव वन डाउट हियर. मुझे एक डाउट ये है, देखो आपको डाउट है ये, दिस कैलकुलेशन इज नो प्रॉब्लम. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Now doubt is this, कि you may think कि cylinder, whatever the size of the cylinder is there, that will be the volume of the gas. How come 22.4? है ना? अगर आप इसका पिस्टन को बाहर निकाल लें या कंप्रेस कर दें तो वॉल्यूम विल डिक्रीज. In place of 22.4 it will be something else. In other words, you may think later on कि जो भी सिलेंडर का साइज होगा that much will be the volume of the gas. Suppose you keep the gas in 15 liter cylinder volume, तो 15 liter होगा. If you keep it in 2 liter volume, it will be 2 liter only. But how come this value 22.4? How can we say? चलो इसको ऐसा समझो. देखो, you take the piston, very light piston, कितना? It should be almost massless. ठीक है? Now, if it is massless and it is free to move up and down, तो प्रेशर कितना होगा इसके ऊपर? 1 atmosphere. If you don't put any weight here, प्रेशर कितना होगा? 1 atmosphere, है ना? You put 1 mole of the gas inside, है ना? You compress the piston, इसको compress कर दो और छोड़ दो. So what do you find? It will just go and get settled somewhere here where the volume will be 22.4 liter. अगर इसको आप बाहर खींचो, suppose you pull it outward, यहाँ पे खींचो and leave it. Again, what you find? It will go down and get settled here only. Again, it will get settled at 22.4 liter mark. If it is free to move, you pull it and you push it and leave it, it will always get settled to this much volume. So that is what is the meaning. It is not that कि जिस cylinder में रख दिया उतना. Of course, if it is confined cylinder, piston cannot move, then it will be occupying lesser volume, but pressure will not be 1 atmosphere in that case. अगर lesser volume कर दिया आपने, pressure will go up. This condition will not meet. If you pull it outward, pressure will decrease, and outward pull किया, pressure will drop here. So again, volume will change. If you drop the pressure, volume will go up. If you increase the pressure, volume will go down. But for this particular pressure and temperature, volume will be exactly 22.4 liter. Can you tell me how much is the 22.4 liter volume? कितना होगा? 22 point कितना? Roughly I'm asking you. कितना लीटर होगा? Bucket is generally, bucket जो है bathroom bucket is of roughly 10 liter, 10 to 20, 10 to 15 liter. So size will be roughly 2 bucket size, one kept over one over other. If bucket is of say 12 liters, the bucket are generally 10 to 15 liters रहती है bathroom bucket. So that cylinder will be half double up that size. 1 liter, you have the idea. 1 liter bottle आपने देखा है ना? 1 liter. So similar 1 liter की 22 bottles के बराबर volume. Got it? This point is clear or not? Any difficulties there? You can ask this. These are the basic points. We should be knowing all these points. Okay. So remember this. And STP we are talking about physics. So you have to take this STP पे 1 atmosphere लेना है, temperature 0 degree Celsius लेना है. Got it? Any doubt here till this question? No, sir. Okay.
रियल गैसेस क्या होती है? व्हाट आर द रियल गैसेस? रियल गैसेस are those gases in which there are some intermolecular forces exist. जो रियल गैसेस हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहता है, तो they don't follow the ideal gas, they will not follow the ideal gas equation PV is equal to nRT. But if temperature is high temperature and pressure is low pressure, then intermolecular forces will become weak. In that case, density will also be low. At high temperature and low pressure, density will be low, and intermolecular forces will be weak, and they can follow the ideal gas law. They can follow the ideal gas law. Okay. So at high temperature and low pressure, when the density of gas decreases, real gases will follow the ideal gas equation because intermolecular forces will become weak. Okay. So this point you remember, sometimes they ask you under what condition real gases will behave as the ideal gas. What you will write? Low pressure and high temperature, when the density becomes low. Common sense से बोल सकते हैं, low pressure पे molecules will be, and high temperature and low pressure it will occupy more volume, and density will decrease, intermolecular forces will come down. ठीक है? Yes, sir. Now let me ask you the question. If I ask you, draw the graph between PV upon NT and P for ideal gas equation. Ideal gas equation के लिए ये टर्म और ये टर्म प्रेशर के साथ, अगर हमने प्रेशर चेंज किया, how these all terms will change, मतलब ये terms की वैल्यू कैसे चेंज होगी? Will it go like this, or will it go like this, or will it go like this, or will it come like this? 1, 2, 3, 4. Which option will be correct? Bolo. Are you getting this point? If you see carefully, what is the term PV is equal to nRT represent what? Ideal gas equation देखो, PV is equal to nRT. Yes. Therefore, R is equal to PV by NT, which is constant. This is constant. It is independent of pressure. It is 8.3, which is not depending upon whether you change the pressure or it is universal gas constant. This is equal to R. So graph is like this. Increase the pressure or decrease the pressure, it is constant value, which is 8.314. Got it? Yes, sir. Now question comes, if it is ideal, if it is real gas, then what will happen? Ideal gas के लिए तो ऐसे आएगा. What about real gas? Real gas की condition क्या है? Temperature should be high. Which temperature is high? T1 is higher. ये वाला temperature high. And low pressure. तो at low temperature, at low pressure, pressure यहाँ पे देखो, low pressure कहाँ पे? यहाँ पर. This at this region, this graph is close to ideal gas. आप देखो ध्यान से, it is close to ideal gas. Second one is when the temperature is less, it is coming down. Temperature is further less, it is coming. So at high temperature and low pressure, real gas will be close to ideal gas. इसका ग्राफ देखो, इसके पास है, close है ना? Are you getting this point? That is because of high temperature and low pressure. Even pressure goes up, then also it is remaining close to this. Other which are having the low temperatures are
away from the ideal gas graph. Got it? Yes, sir. तो ये इस पे देखो क्वेश्चन है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन द एम्स एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चन है, देखो. कैन यू ट्राई एट होम? क्वेश्चन नंबर 3, इट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ये आइडियल गैस का ग्राफ है ना, और ये आपका दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ग्राफ है. व्हाट दे आर आस्क्ड, व्हाट डज द डॉटेड प्लॉट सिग्निफाई? डॉटेड प्लॉट क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट इज द ग्राफ फॉर आइडियल गैस. फर्स्ट पार्ट आई एम completing. Second part देखो, which is true, whether T1 is greater than T2 or T1 is less. T1 Which is greater than greater? T2. T1 greater than T2. Second part is also similar to that, based on that point only, because it is close to the ideal gas equation. Now, what is the value of PV by T? PV by T. PV by T will be what? N into R. N दिया है क्या इसमें? हाँ, मास ये दिया है ऑक्सीजन का. N निकाल सकते हैं इससे. यू कैन फाइंड आउट. किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको? The molar mass दिस of इज द मास गिवन. मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑक्सीजन का 32 O2 का 32 व्हाट? ग्राम और किलोग्राम? ग्राम. ग्राम होता है 10 to the power -3. तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 to the power -3. तो 1/32 लिखना पड़ेगा ना. इट इज 1 ग्राम है ना. तो R की वैल्यू 8.3 पुट कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ पार्ट सी. पार्ट सी. पार्ट डी खुद करो. एटलीस्ट 3 पार्ट आई टोल्ड यू. पार्ट सी का आंसर कितना आएगा? आंसर देख लेना है ना. आंसर कैन यू सी द आंसर? यू कैन जस्ट नोट डाउन. यू कैन टेक द पिक अप दैट. एंड फोर्थ पार्ट डू सिंसियरली. अपने आप ट्राई करो फोर्थ पार्ट. ठीक है. 3 part I told you. Fourth part you have to do yourself. Third part also you can calculate and match the answer. पहले मोलर मास निकालना है, इसको डिवाइड करके, आई मीन नंबर ऑफ मोल्स निकालने, मोलर मास से डिवाइड करके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके आर की वैल्यू भी रहेगी 8.3. तो यू विल गेट दिस वैल्यू. एंड डी को रीड इट एंड अंडरस्टैंड एंड डू योरसेल्फ. कैन यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Important है, particularly those who are going for competitive examination. Part D is important for them. That's all from my side.